Hello student, myself Mukesh Kumar Tiwari from LPM Public School, and today I will teach you the chapter number first, that is the atomic structure. You know very well that we already talked about for the chapter number first, that is matter in our surrounding, then is matter around us, pure than atom and molecules, and now today we have to discuss the atomic structure. So first of all you have to know that what is the need for the study of this chapter, that is the atomic structure. You know very well that we already talked about for what is the atom or what is the definition of the atom. You know the definition of atom. Atom is the smallest. Atom is the smallest part of the matter which cannot be in a free state and also it can not be further divided. Clear? So this is the definition of the atom. Especially in this chapter, we have to talk that atomic structure, that is the structure of atom. So first you have to know that what is the definition of the atom. Definition are given here. Atom is the smallest part of the matter. This is the smallest part of matter which cannot be in a free state. That means the atom cannot be in a free state. That means it cannot survive as a free form. Clear? It always combined with another atom to form a molecule. Clear? And also atom cannot be further divided into more simpler form or into more simpler units. Clear? So the question is that in this chapter we have to talk that how the atoms looks like. Clear? So let's come on the second topic in this chapter. What is the composition of topic name is composition of atom. Clear? Composition of atom. Electron, proton and neutron. Clear? You know very well, or here when we talk about for the composition of atom. Clear? So you have to remember this point that in every atom there are three basic things, that is the electron, proton and neutron are present. Clear? Except only one atom, that is the hydrogen atom, which does not contain neutron. It contains only electron and proton. So you have to remember here that atom contains the three fundamental particles, that is electron, proton and neutron. Clear to everyone? So in composition of atom, the three things, the electron, proton and neutron, you have to remember. Now my next question is that how we know that the atom contains electron, proton and neutron. Clear? So for this you have to consider the structure, that means first you have to know that how the electron is discovered, or how the proton is discovered and how the neutron is discovered. Clear? So I will talk about for the first fundamental particles, that is electron. These three
that is electron, proton and neutron are collectively known as fundamental particles. Clear? These three are known as fundamental particles. Clear? So, the next topic is how electron, proton and neutron have been discovered, or how the scientists predict the presence of electron, proton and neutron inside the atom. Clear? So now come on, we have to talk about the discovery of electron or discovery of cathode rays. Clear? So we have to talk about the first thing is discovery of cathode rays, that is discovery of electron. This is the topic we have to consider. Listen student. What is the heading? Discovery of cathode rays or discovery of electron. Clear? What is the question? That we have to prove here that how the atom contains electron, proton and neutron in it. Clear? So there are some historical explanation for the existence of electron, proton and neutron inside the atom. And the first thing is the discovery of cathode rays, and this discovery of cathode rays is directly related with the discovery of electron. Clear? So let's start how the electron have been discovered. So first we have to talk about the cathode rays, or how the cathode rays discovered. Clear? You know very well that the physical state of matter, there are three main physical state of matter. The first one is the solid, then liquid and third one is the gas. Clear? When we talk about for the electrically conductance, or one that is the electric current carried by the solid as well as liquid, and for gas. So the scientists started to predict that the gases conduct electricity or not. Clear? To explain this, the scientist named was Michael Faraday, who just said that we can pass the electric current inside the liquid, and he just carried out the process of electrolysis. Clear? So we are here we talk about that how the electric current passes inside the gaseous system or inside the gases, or how we have to prove that the gases conduct electricity or not. Clear? So let's consider the first scientist was the Julius Plucker in 1859. Julius Plucker in 1859, he performed an experiment which is known as the cathode rays experiment. Clear? He just taken, look at here, what was the experiment here performed by Julius Plucker in 1859? This is a glass tube. This is a glass tube, and he just placed the two metal rod inside each. This is the cathode and this one is the anode. And he just taken out the two wire from each electrode like this. This is the minus charge, that is cathode, and this one is the positive charge.
here, and this is the here, and inside it gas is filled. Here, this is the cathode, and this is the anode, and here high voltage, and this one is the gas, and this is the vacuum pump. Now let's come on. What was our point? Our point is how the electron have been discovered, and the discovery of electron is indirectly correlated with the discovery of the cathode rays. Clear? So the matter started from that the gases conduct electricity or not. So first of all, in 1859, Julius Plugger performed an experiment which are given here. Clear? This is a glass tube which is known as discharge tube. The name of this glass tube is discharge tube. Clear? And he just placed the two metal rod. This is first metal rod, and this one is the second metal rod, which is this one is the cathode and this one is the anode. Negatively charged metal plate is cathode and positively charged metal plate is anode. And he just taken out a wire from anode and a wire from cathode and connected it with the high voltage source. And inside it a gas is filled, and below this a vacuum pump is placed. Clear? So the Plugger was started to observe that the gases conduct electricity or how it conduct electricity. So this was the experiment performed by Julius Plugger for the explanation for the gases conduct electricity or not. Clear? When the reaction started or when the voltage or current are started to send in this inside this discharge tube, clear, no reaction or starting. That means here we can say that when Julius Plugger started to pass the electric current inside the glass tube, and in this glass tube the gases are filled or present. Clear? You just want to know that, or you just want to predict that the gases conduct electricity or not. Clear? So let's come on. I just want to explain this fact in Hindi also. Listen student, आप लोग ये देख रहे हो, सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं? ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर. क्लियर? इसमें हमने एटम के बारे में कंसिडर करना है. देन आफ्टर जैसे एटम में क्या क्या प्रेजेंट होता है. एटम में आप जानते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है? अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ये पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? सो इसको ऑब्जर्व करने के लिए डिस्कवरी, जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इसके लिए कई सारे पॉइंट्स दिए गए. अब वो पॉइंट क्या है? यहाँ से सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो जूलियस प्लकर ने स्टार्ट किया, जिसको कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हम कह रहे हैं. क्लियर है ना? अब ये शुरुआत कहाँ से हुआ? आप सभी लोग जान रहे हो कि मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. अगर हम सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड में आराम से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा सकता है, लिक्विड में भी आराम से पास किया जा सकता है. लेकिन अगर गैस की बात करें तो गैस में थोड़ा सा सस्पेंस बन जाता है कि गैस में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं. तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट जूलियस प्लकर कर रहे थे 1859 में. उन्होंने कहा एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया. ये देख रहे हो, इस डिस्चार्ज ट्यूब में 2 मेटल रॉड, जिसको एक कैथोड बनाया गया, एक एनोड बनाया गया, और इसमें गैस को फिल किया गया और दोनों को एक वायर से ले जाकर हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया. ठीक है ना? और ये इसलिए किया गया ताकि ये देखा जाए कि गैस में करंट पास हो रहा है कि नहीं. क्लियर?
तो जूलियस प्लगर ने यहाँ से करंट भेजना शुरू किया, और जब वो करंट भेजना शुरू किए अंदर, तो ऑब्जर्व करना उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया कि गैस करंट को कैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो करंट को बढ़ाते चले गए, यानी पहले उन्होंने कितना 100 वोल्ट का करंट उसमें भेजा, फिर 200 का भेजा, फिर 1000 वोल्ट का करंट भेजा, यानी ये करंट को जो भेज रहे थे तो ऑब्जर्व कर रहे थे कि इसके अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे 1 बाय 1 वो करंट को पास कर रहे थे, तो ऑब्जर्व कर रहे थे कि उसके अंदर रिएक्शन जो ऑब्जर्व यानी रिएक्शन हो नहीं रहा था। कहने का कुल मतलब ये था कि धीरे धीरे वो वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन उस गैस के अंदर या उस सिस्टम के अंदर कोई रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था। यानी इसका मतलब गैस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट अभी कर नहीं रहा था, या उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। ऐसा करते करते वो 10,000 वोल्ट तक पहुंच गए। कितना? 10,000 वोल्ट तक का करंट उन्होंने उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पास कर दिया, तब पर भी उनको इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन दिखाई नहीं दिया। अब उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई दूसरी चीज या थोड़ा सा हम सिस्टम को अलग करते हैं। उनको ये लगा थोड़ा सा हम लोग ये एनोड को इधर करते, कैथोड को इधर करके फिर से करंट भेज दें, तब भी नहीं हुआ। यानी वो अब ढूंढना शुरू कर दिए कि आखिर रीजन क्या है। क्लियर? और रीजन ढूंढते ढूंढते उनको एक पॉइंट मिला जिसका नाम है वैक्यूम पंप, जहां से प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वैक्यूम पंप से प्रेशर को थोड़ा सा रिड्यूस किया, ठीक है। जैसे ही प्रेशर को उन्होंने रिड्यूस किया तो देखा क्या कि रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही उनको ये पता चला कि सारी जो चीजें हैं हम कर रहे थे नहीं हो रहा था, तो वैक्यूम पंप से जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस किया उन्होंने, तो रिएक्शन होना शुरू हो गया। यानी उनको पॉइंट मिल गया यहाँ से, ठीक है। उनको यहाँ से पॉइंट मिल गया कि यहाँ सारी चीजें यहीं स्टोर हैं, और यहीं से उन्होंने प्रेशर को कम करना। अब धीरे 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 वो ग्रेजुअली प्रेशर रिड्यूस करके चले गए, और एट लास्ट उनको एक ऐसा ऑब्जर्वेशन मिला जिसमें उन्होंने देखा क्या कि कैथोड से कोई रेज निकलती है और एनोड के पीछे वाले वॉल पर एक तरह का लाइट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो एनोड के पीछे लाइट बनने का मतलब ये था कि ये कैथोड से ही आ रहा है। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर? सो let's go on. Finally, Julius Plugger observed that after reducing the pressure from the vacuum pump, there is a kind of rays emitted from the cathode side, and it will fall on the back wall of the anode. Clear? And there will be a fluorescence or light observed. So he just predicted that this fluorescence or light was produced by the cathode, and after all the rays is considered as cathode rays. Clear? So I will talk about for the properties of cathode rays in my next video. Thanks to all.